Students. Chalo. Hello everyone. Welcome to the session. Just checking audio and video. Hello Saurabh. Hello beta. Hello dear. Okay. Chalo guys. Hello everyone. Hello Kittu. Saurabh, आपने जो डाउट पूछा था ना, मैंने आपको सॉल्व करके भेजा। जो पार्ट आपका एरर था उसी बेस पे आज एक क्वेश्चन भी लिया है मैंने, ठीक है, तो आपको और क्लियर होगा इन योर डाउट व्हेन यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन गाइस। दिस इज आशीष कुमार। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैट 2025 QA स्टेप अप सीरीज सेशन 2। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, so give me answer to this. I'll give you some 60 seconds एक बार question read out करने के लिए to understand the question. You may or may not be able to answer this question within 60 seconds, but at least I want you guys to read the question carefully and start attempting it. We will discuss this, we'll start discussing this question after 60 odd seconds. Attempt it guys. Read the question carefully. क्या है और क्या नहीं है. Read it carefully. Do you like the session guys? Okay, chalo, let's try this question. Now the question says that 3 minus root of minus 5 is one of the roots of the equation. So this is nothing but a complex root. This is a complex root, 3 minus. So this can also be written as 3 minus root 5i, right? 3 minus root 5i. Sir, it's a guiding session. नहीं, practice session है. सर ये जो है कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, मतलब हमारे सिलेबस में. So technically complex is not in our syllabus, but this question does not focuses on concept of complex numbers. Okay. बस एक बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए. What understanding वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. So technically it is not a question of complex numbers. This is a question of polynomials. If you focus on the equation, so this is a cubic equation. It must have 3 roots, right? One of the roots is complex number. So definitely एक और root होगा which would be the complex conjugate of this. One of the roots is 3 minus root 5i. Okay. This is 3 minus root 5i. So the second root would be a complex conjugate. This is what we are aware of. And third has to be a real number. Third root has to be a real number. क्यों? क्योंकि complex conjugate उसका बन नहीं सकता है. So it has to be, तीसरा वाला has to be a real number. Let's say R is the third root. और आपको ये third root figure out करना है. You have to figure out this third root. Okay. Now
The equation that we have is 3x cube minus 23x square, 3x cube minus 23x square plus 72x minus 70 equals 0. हेलो सिया, जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट है, मोस्टली यहां पर रूट्स है, क्यूबिक इक्वेशन है, सो यू कैन यूज सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन? अगेन माइनस बी बाई ए है, दैट इज माइनस बी बाई ए. हियर माइनस 23 by a is 3, so sum of roots is 23 by 3. है ना? So minus b by a, minus b by a, c by a, minus d by a. Sia. So sum of all of these three, it has to be 23 by 3. So I can proudly say that 3 minus root 5i plus 3 plus root 5i plus r, it has to be 23 by 3. This and this is cancelled out. R is 23 by 3 minus 6. So this is how much? 5 by 3. So third root is 5 by 3. Not 5, but 5 by 3. Not 5, but 5 by 3. Options थे, but I wanted you to solve this question without options. Correct answer is option B. Okay. I was not feeling well, Sia, इसलिए मैंने अपना बीच से हटा दिया. But Ritu ma'am and Surana sir went for the marathon. Okay, so this is the right answer to the question. Next question पे jump करते हैं. Quickly guys, ऐसा एक question CAT में आया है. This is not a PYQ, but a like question has appeared in CAT recently. Try this one. आपको Z का range निकालना है. Okay, again I have the options in the next slide. But I want you guys to attempt this question without any options given. Okay, you got 60 seconds. You got 60 seconds. Try करो. हाँ, प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं सौरभ. प्रोडक्ट से भी आई एलिमिनेट हो जाएगा एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं. बोथ वेज वर्क्स. Product is not minus 70, minus 70 by 3 होगा, definitely A. Minus D by A is the product. CAT also takes questions from JEE advanced paper. I don't know यार. I mean JEE advanced से क्या ले सकते हैं? अलजेब्रा उठा सकते हैं, राइट? लेकिन नहीं, JEE advanced का सिलेबस जो कॉमन है इज अलजेब्रा, ओनली n नंबर सिस्टम्स आई बिलीव, और कुछ नहीं है कॉमन. सो हाँ, वो बाई 3 तुमने मिस कर दिया. ओके. नो, ऐसा एक क्वेश्चन रिसेंटली वाज आस्क्ड इन चेंज्ड पैटर्न ऑफ कैट. ओके, 2017 ऑनवर्ड्स में पूछा था उन्होंने. आई विल गिव यू द ऑप्शंस नाउ. द ऑप्शंस दैट वी हैव. The options that we have for this particular question. Aajao. So what is given? Minus x lies from minus 3 to 5. Okay. And z is nothing but 3x minus 4y. Z is nothing but 3x minus 4y. So if x lies from here to here, 3x will lie from 15 to minus 9. Bolo yes sir. Right, this is the range of 3x. Similarly, y lies from 12 to minus 7. I am looking for 4y. 4y will lie from
48 to minus 28, right? So what is the maximum value of 3x? 15. What is the minimum value of 3x? Minus 9. What is the maximum value of 4y? 48. What is the minimum value of 4y? Minus 28. Okay, very good. Now आपको इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, z का रेंज निकालना है. z इज नथिंग बट 3x minus 4y. z मैक्स कब होगा? अगर मैं z मैक्स निकालना चाह रहा है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट z मैक्स, तो टेक्निकली 3x शुड बी मैक्सिमम एंड 4y शुड बी मिनिमम, है या ना? एक बड़े नंबर में से एक छोटे नंबर को माइनस करेंगे, राइट? 3x शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल, 4y शुड बी मिनिमम पॉसिबल. 3x मैक्सिमम क्या है बेटा? 15 माइनस, माइनस करना है एक छोटा नंबर. 4y मिनिमम पॉसिबल क्या है? minus 28. So this is 15 minus 28. So 15 plus 28, 43. So the maximum value is 43. D is not the answer, B is not the answer. The maximum value is 43. Very good. अच्छा, Z मिनिमाइज करना है, आपको Z को मिनिमाइज करना है, Z मिनिमम निकालना है, राइट? अब Z मिनिमम निकालना है, तो व्हाट शुड बी द कंसेप्ट हियर? सर 3x मिनिमम होना चाहिए और 4y मैक्सिमम होना चाहिए. छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर दो. सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x? 3x का मिनिमम वैल्यू इज -9, माइनस 4y का मैक्सिमम वैल्यू इज 48, राइट? सो -9 minus 48 is -57. So Z का maximum value is 43, minimum value is -57. Option A is the right answer. Very good. चलो, ऐसा एक क्वेश्चन आया था in some year back in CAT. So this is not a PYQ, but a like question. Try this question. The number of distinct solutions of the equation this is how much? I'll give you 2 minutes, and I want you guys to tell me कि अगर इसके 4 solution है तो what are the solutions as well? Give me what are the solutions as well. Solution क्या है वो भी आपको बताना है, ठीक है? And also what are the values of x? What are the possible values of x? If you say there are 5 solutions, what 5 solutions of x are possible? ये भी आपको बताएं कि I've given you 2 minutes for the same. चलो, do it. (1332) in Quant or 1332 overall, Anant? (3032) Quant means you are getting close to, you are attempting 12-13 questions, you are getting couple of questions wrong. Kittu says 2, and so what is 2? 2 is the value of x or number of possible solutions of x. करते हैं बात अनंत इसके ऊपर. Kittu says 2. So there are 2 solutions of x, or 2 is one of the solution of possible value of x. क्या है सीन Kittu? Very good. चलो गाइस, देखो
number of distinct solutions of the equation mod of 3x minus mod of 5x plus 7 mod equals 10. Okay. तो हाँ 30-32 इज अ गुड मार्क्स इन क्वांट टेक्निकली, बट हाँ अगर आप अभी 30-32 ला रहे हो तो यू कैन टॉक अबाउट इंक्रीज बूस्टिंग इट बाय अनदर 10-12 मार्क्स, यू कैन ऑलवेज डू दैट. तो केस 1 क्या हो गया बेटा? केस 1 इज व्हेन 5x plus 7 is greater than 0 or x is greater than minus 7 by 5. I mean this is case 1. इस अंदर वाला पॉजिटिव हो सकता है, अंदर वाला नेगेटिव हो सकता है, राइट? सो केस 1 इज व्हेन 5x plus 7 is greater than 0. So when it is greater than 0, mod अपन होगा, तो as it is open होगा, so that would be 3x minus 5x plus 7 mod equals 10. Okay, so this gives me 3x minus 5x. In fact, this would be minus 2x minus 7 is equal to 10. Has two possibilities. इसके दो possibilities है. First is minus 2x minus 7 is equal to 10. Second is minus 2x minus 7 is equal to minus 10. Right? Now, this equation gives me 2x को right side ले जाओ, x is equal to minus 17 by 2. X is equal to minus 17 by 2. So first case gives me minus 17 by 2. Sorted? And second case gives me x is equal to or 2x 3 by 2. 3 by 2, right? X is 3 by 2. But here I know that x has to be greater than minus 7 by 5. मतलब x has to be greater than minus 7 by 5 is somewhere around minus 1.4. x इससे बड़ा होना चाहिए. But this minus 17 by 2 is less than this. So this is not acceptable value of x. I know that my basic assumption says that x has to be greater than minus 1.4. This is technically less than minus 1.4. Is not an acceptable value of x. So one possible value of x is 3 by 2. One possible value of x is 3 by 2. Now, guys, you have to analyze, investigate second case as well. Second case क्या है? When 5x plus 7 is less than 0. Case 2 is when 5x plus 7 is less than 0. सौरभ, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, आपके क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि आपको प्रॉपर अजम्पशन करना है एंड अजम्पशन एंड आपका आंसर का जो ओवरलैपिंग वैल्यू है वो लेना है. दैट वाज द एरर दैट यू आर कमिटिंग. आपने जो क्वेश्चन मुझे शेयर किया था, दैट वाज द प्रॉब्लम इन योर क्वेश्चन. सो आपका अजम्पशन और आपका आंसर का ओवरलैपिंग वुड बी द आंसर दो केसेस में. फर्स्ट केस आपके क्वेश्चन में भी दो केस बन रहा था, मैंने दो केस बना के दिया था, राइट? व्हेन द ब्रैकेट वाज ग्रेटर देन 0, व्हेन द मॉड वाज लेस देन 0. नाउ दिस इज द सेकंड केस वी नीड टू इन्वेस्टिगेट. नाउ इफ दिस इज लेस देन 0, ये मॉड से बाहर निकलेगा तो इट विल कम आउट विथ अ नेगेटिव साइन. सो व्हाट आई गेट 3x मॉड के बाहर आए नेगेटिव साइन, सो प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स 10. Right? So this is 8x plus 7 mod of 8x plus 7 equals 10. Again, इसके दो केसेस बनेंगे. So 8x plus 7 is equal to 10. 8x plus 7 is equal to minus 10. The first one will give you x is equal to 3 by 8. And second one gives you x is equal to minus 17 by 8. Here I know that x has to be less than minus 7 by 5. x minus 7 by 5 से छोटा होना चाहिए. x minus 7 by 5 से छोटा होना चाहिए. Right? Take this out. From the assumption I know that x has to be less than minus 7 by 5. So this value is not accepted.
because this technically is greater than is contradicting this basic assumption. This is an acceptable value. So technically this question had two solutions, and the solutions were 3 by 2 and minus 17 by 8. Sorted? 3 by 2 and minus 17 by 8. Bolo yes sir. Yes sir. Do like the session guys, and let's jump to the next question. मैच देखेंगे यार, लेकिन सेशन के बाद देखेंगे यार. इंडिया पाकिस्तान तो देखना बनता है यार. पॉलिटिक्स अपनी जगह है और इंडिया पाकिस्तान का ऑल टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स अपनी जगह है. मैच तो देखेंगे यार. आई मीन बट ये सेशन के बाद. चलो ट्राई दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन. I'll give you 2 minutes इसके लिए. How many ordered pair of integers a, b, where b greater than 0 satisfy the equation 2 by a plus 3 by b equals 1 by 4? Come on, Chotu. क्या सर एक मैच नहीं स्किप कर सकते? अगर जरूरत पड़े तो मैच भी स्किप कर दिया जाएगा यार. स्किप तो क्या क्या नहीं किया है जिंदगी में, सब कुछ स्किप किया है. जरूरत पड़ा तो मैच भी स्किप कर देगा. देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड जिसके लिए मतलब आई कुड बी वेरी सैड. मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला. एग्जाम में डीएलआर अटेम्प्ट करने के लिए पहले आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट. जनरली लोग बोलते हैं. अच्छा, आई विल टॉक अबाउट हाउ टू. मैंने दिया है राहुल गोला रिवीजन पीडीएफ. मतलब इन मटेरियल वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू शेयर बिकॉज अभी इतना कमिटमेंट है कि वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रिएट अ पीडीएफ एंड शेयर इट विथ यू. इट टेक्स टाइम. बट मैंने प्लान दिया है. बट आई बिलीव यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ प्लान, यू आर लुकिंग फॉर अ पीडीएफ. चलो गाइस, डीएलआर का I'll talk 2 minutes after this, after solving this question. कि डीएलआर में ना क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत. आई मीन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. डेट इंक्रीज हो गया ना गणेश, 20 हो गया ना डेट इंक्रीज होके एग्जाम का. हर साल एक हफ्ते बढ़ जाता है. मैंने पहले भी बोला था, सिया ने पूछा था शायद. एनीबॉडी? How many ordered pair of integers where b is greater than 0 satisfy this particular equation? Last date is 20th of September, Ganesh. Earlier it was 13th of September, but CAT has increased the deadline by a week, so it's 20th of September now. Now I'll fill the form. I haven't filled the form for CAT abhi tak. I knew that वो बढ़ाएंगे. Now I'll fill the form. अच्छा, how many ordered pairs of integers where b is greater than 0 satisfy this equation? Anybody? Nobody gave me the answer इस question का. I am nobody. At the age of 36, definitely I'm not attempting CAT. मतलब for taking admission after doing masters in mechanical engineering for sure. दो बार masters makes no sense. How many ordered pairs of integers where b is greater than 0 satisfy this equation? Right. So equation that we have is 2 by a plus 3 by b equals 1 by 4. Right. ओके देखो, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करो. यू विल गेट, ऐड किया तो 3a plus 2b अपॉन ab equals 1 by 4. So this is 12a plus 8b equals ab, right?
Okay, this can be written as AB minus 12A minus 8B equals 0, right? AB minus 12A minus 8B equals 0. Okay. Now, guys, do focus. यहाँ पर ना, what you need to do, most of the students get confused किसके आगे क्या कर रहा है. Okay, you have this equation. थोड़ा simplify करेंगे obviously. Okay. इसके बाद क्या करना है? AB आप इधर से ना इसको try to represent this as a product of two factors. We will try to represent this as a product of two factors. That's the agenda. Okay. So take A as common. So A would be B minus 12. Okay. So यहाँ भी I want B minus 12. Okay. 8 common लिया, I want B minus 12. Now for that, I'll have to add minus 96 over here. Do understand this. ये देखो. Assuming that you have been preparing for some time now, ये आपको समझ में आना चाहिए. Okay. A common लिया, B minus 12, minus 8 common लिया, I want B minus 12 here as well. So minus 8B is what I have, plus 96 I added. So I need to adjust it by minus 96. Okay. So I can take A minus 8, B minus 12 is equal to 96. So now this is represented as a product of two factors. This is represented as a product of two factors. Okay, so this is 96. Now, guys, अच्छा ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर था? नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर था ये क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज number of factors. How many factors 96 had? 96 के कितने फैक्टर्स है? सर 96 is 32 into 3, so 2 raised to the power 5 into 3 raised to the power 1. So this is 6 into 2. 96 has 12 factors. 96 had 12 factors. सर हिडन ट्रायल में ने बहुत टाइम वेस्ट करा दिया. ओके हाँ थोड़ा सा मतलब एंड हिडन ट्रायल के बाद फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट से कि हाँ दिस इज द नंबर ऑफ पेयर्स. सो 96 हैज 12 फैक्टर्स. सो आप क्या कर सकते हैं? देखो प्रोडक्ट 96 है, both of them would be positive or both of them would be negative. Now 96 has 12 factors. The factors of 96 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, right? 24, 32, 48 and 96. कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12. आपको समझाने के लिए लिखा है. Okay. So if this is 1, if B minus 12 is 1, so this would be 96. If this is 2, so this would be 48 and so on. So each pair will give me one pair of A and B. The first pair, 1 and 96. There are 12 possible values for B minus 12 and same for A minus 8, 196, 248, 3, 32 and so on. So 196 gives me one possible answer for A and B. If A minus 8 is 96, gives me A is 104, right? This gives me A is 104 and B minus 12 is 1, so B is 13. So B13, A12, sorry, A104, B13 is one solution. You guys do understand this? This is one solution जो यहां से आया है, right? A104, B13 is one solution. Similarly, for each pairs you will have one solution, one pair of solution. So 12 solutions from here, 12 solutions from here, 12 pairs from here, assuming both of them are greater than 0, both of them are positive, right? Yes or no? ये समझा क्या आपको? When both of them are positive,
You have 12 pairs. Okay, but 12 is not the answer. अभी और भी pairs है. अभी और भी pairs है. Now, both of these factors could be negative as well. Negative into negative is positive. So b minus 12 could be minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 6, minus 8, minus 12, minus 16, minus 30, 24, minus 32, minus 48, minus 96. In that case, a would be minus 96 here, minus 48 here, and so on. Both of them negative. So guys, अब ध्यान दो. Again, you think there are 12 more pairs, but that is not the case. 12 pairs, you will not consider all of them. Why? Because when b minus 12 is minus 1, so what would be b? What would be b? b क्या होगा? Sir, b minus 12 is minus 1, so b is 11. Here b is 11, right? Here b is 9. Okay? Yes or no? No, 9, 8, 10, sorry. Here b is 10. Here b is 9. Here b is 8. Okay? Here b is 6. Here b is 4. And here onwards b is 0 and then negative. I know that b is greater than 0. Okay? So, negative value of b is not possible. I cannot take negative values of b. So, ये सारे values count नहीं होंगे. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 more solutions are possible. There is no restriction on A. So, 6 more possible values of B are there. Sorted, and hence B के लिए A भी आपको मिल जाएगा. You can easily calculate it. So, 6 more pairs. Total 18 pairs. Answer to this question was 18. Right. Clear है अभी? Total 18 value, right? 12 when both of them are positive. 6 when both of them are negative, because we have some criteria for B. Total answer is 18. Clear है guys? बोलो हाँ जी. बोलो yes sir. Hit and trial से it's difficult. क्यों? क्योंकि hit and trial से you can find couple of pairs. Maybe you can find all 18 pairs, but you are not sure कि 19th pair भी है क्या. Okay, 18 pair ढूंढने के बाद, which itself is a daunting task. You should not be stopping, क्योंकि 19th pair भी हो सकता है ना. So hit and trial in this particular question is a waste of time. Okay, try this question बेटा. You got a minute. आपके पास 1 मिनट है. चलो. Easy, this one is easy. Conceptual, but easy. If the roots of the quadratic equation x square minus px plus q is equal to 0 are two successive multiples of 5, then the value of p square minus 4q is what? One. Out of Gangulis, one. Guys, देखो, the roots of the equation are x square minus px plus q. X square minus px plus q, that's the equation. Let's say the roots are successive multiples of 5. Let's say the roots are
और अल्फा 5a बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं 5a प्लस 5 टाइम्स a प्लस 1. ओके, सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 5. ओके, what is the sum of roots? Sum of roots is alpha plus beta is minus b by a, which is p, which is equal to 5a plus 5a plus 5 or 10a plus 5, right? Product of roots alpha beta is nothing but c by a, q here, which is equal to क्या होगा, अच्छा 5a इंटू 5a प्लस 5, ये है ना. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज 25a प्लस 25, 25a plus 25, product of roots alpha into beta. Very good. Now मुझे कहीं ना कहीं p की वैल्यू पता है. We are aware of the value of p. We are aware of the value of q. Put it over here. p square minus 4q. So p square minus 4q is nothing but 10a plus 5 whole square minus 4 times 25a plus 25. So that's 100a square plus 25 plus 100a minus 100a minus 100. Okay. Okay. This is 25a square plus 25 na. This is 25a square plus 25a. Okay, so this is यहां पर ये हो जाएगा 100a square minus 100a. So 100a square cancelled out, 100a cancelled out, 25 बच गया. So answer is 25. Answer is 25. Answer is 25. A1 B equal P C equals Q. Very good. अच्छा, talking about DILR. Let's talk 2 minutes about DILR. DILR में क्या कर सकते हैं. डेफिनेटली सुराना सर ने की स्ट्रैटेजी आपको बताई होगी. And he's too good with his subject. I am aware of that. Goat himself. If his strategy is working, very good. But still, if you want to understand कि और क्या strategy हो सकती है, so what I recommend students when I used to teach DILR, आप क्या कर सकते हैं. First pre-requirement है कि आपने करा है सिलेबस अच्छे से. आपने DI के सारे टॉपिक्स करे हैं, सारे ऑर्थोडॉक्स वाले, टेबल, बार, लाइन, पाई, उनमें लॉजिकल टेबल, लॉजिकल पाई, लॉजिकल पारग्राफ, लॉजिकल लाइन ग्राफ, जितने भी मिसलेनियस है, वेब, स्पाइडर, 3D, वॉल्यूम बेस्ड, एरिया बेस्ड, सब करा है आपने. वेन डायग्राम अच्छे से करा है, मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से करा है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स अच्छे से करा है. एंड अगर बात करें हम लोग LR की, LR में आपने अरेंजमेंट्स, लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन करा है, टीम सिलेक्शन करा है आपने, और क्या करा है, रूट्स एंड नेटवर्क्स करा है. ये सारे टॉपिक्स एटलीस्ट आपको करने हैं. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आपको करने हैं. थोड़ा सा आई वुड गो आउट ऑफ द बुक एंड आई वुड से कि क्रिप्टो अरिथमेटिक भी आप कर लेना, 2-4-5 क्वेश्चन. शेड्यूलिंग तो डेफिनेटली आपको करना है. क्रिप्टो अरिथमेटिक थोड़ा कर लेना. क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स कर लेना, राइट. क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स में वो वाले क्वेश्चन, पेंट किया, कट किया, उस टाइप के क्वेश्चन कर लेना. आई पर्सनली बिलीव कि आ सकते हैं. एंड वन यूनिक टॉपिक आई वुड रिकमेंड. इट्स इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी. काफी दिन से आया नहीं है बट पहले आया करता था. बाइनरी इक्वेशंस.
या बाइनरी लॉजिक, ये कर लेना एक, मतलब इट्स इजी। आई वुड से डोंट गो ब्लैंक फॉर दिस टॉपिक। बाइनरी कर लेना, बाइनरी इज वो वाला जहां पे ऑल्टरनेटर, ट्रुथ टेलर वगैरह की बात होती है। बिकॉज अगर बाइनरी के ऊपर क्वेश्चन आया ना तो इट वुड बी इजी। बाइनरी में देयर इज अ सेट एल्गोरिथम, इट इज इजी। सो आई एम अस्यूमिंग कि आपने सारे टॉपिक्स करे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी तभी वर्क करेगी इफ यू हैव डन द बेसिक्स। Now sit in the examination with something in your mind, like कि मुझे ना 2.5 से 3 सेट ही अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं। ओके, आपको ये एटीट्यूड लेकर बैठना पड़ेगा that I'm gonna attempt only 2.5 सेट्स। अगर आप 4 के 4 सेट अटेम्प्ट करने के एटीट्यूड से बैठोगे, you will end up solving 1 set। सो आपको टारगेट रखना है 2.5 सेट्स and you have 40 minutes for this। okay, couple of sets अगर आपको दिखते हैं, straight away start solving them। if you see bar graph, line graph, अगर आपको ग्राफ्स दिख रहे हैं, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, और विदाउट एनी डाउट स्टार्ट सॉल्विंग देम। नहीं, वो 2 सेट इसलिए मुश्किल से होते हैं क्योंकि आप 4 सेट के चक्कर में रहते हो। देखो, no, when you have to go through all the sets एक बार, like the overview within 2 minutes, and if you see a question of graphs, bang on, attempt it, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन और recent year में has always been easy। okay, it has been easy and उसमें difficult question बनाना possible है, but again difficult question भी रहा तो you will be solving at least, अगर 5 question है तो 4 कर लोगे, 3 कर लोगे। graphs, if you don't see any of the graphs, अगर आपको ग्राफ नहीं दिखा, then what to do? अगर आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है, then what to do? let's say there are 5 sets, set 1, set 2, set 3, set 4 sets है, 5 भी हो सकते हैं। let's say there are 4 sets, 5 questions each, 4 sets, 5 questions each, और ग्राफ नहीं है, none of them is a question of graph, then without going for the concept called set selection, you start solving first set and give yourself 3 minutes। give yourself 3 minutes, 3 मिनट तक उसको सॉल्व करो, 3 मिनट तक इसको सॉल्व करो, एंड 3 मिनट के बाद यू विल फिगर आउट कि हाँ ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आई मीन देयर वुड बी 3 पॉसिबिलिटीज कि ये हो जाएगा सर, ये नहीं होगा सर, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 3 मिनट के बाद इफ दिस इज द केस, आपको लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, देन सॉल्व इट, नहीं तो स्किप इट आफ्टर 3 मिनट्स। आफ्टर 3 मिनट्स देन जंप टू सेकेंड सेट, फॉलो सेम, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन को 2-3 मिनट दोगे नहीं सेट को, यू कैनॉट डिसाइड कि वो सॉल्वेबल है कि नहीं है। यू कैनॉट डिसाइड वो सॉल्वेबल है कि नहीं है। merely reading will not give you an idea, it will give you a false impression। merely reading and saying कि हाँ ये तो आसान है, क्योंकि अंदर उन्होंने क्या क्राइटेरिया डाला है, क्या केस बनेंगे, यू आर नॉट श्योर ऑफ दैट। सो आपको 3 मिनट देना है। सेट 2 अगेन, या तो हो जाएगा, या तो नहीं होगा, या तो कच्चा पक्का। अगर हो रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो स्ट्रेट अवे छोड़ दो। यू विल फाइंड आउट कि कोई एक ऐसा सेट है जो आपको पक्के से हो रहा है। ओके, और उस सेट को सॉल्व करने में आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। लेट्स से सेट 3 आपने सॉल्व कर लिया 5 से 7 मिनट में। टाइम कितना निकल गया? 3 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट और 7 मिनट, 13 मिनट निकल गया। 13 मिनट निकल गया, 13 मिनट निकल गया। एक सेट सॉल्व कर लिया आपने, एंड 2 सेट का आपको आइडिया है, बट अगेन स्किपेबल था, आपने स्किप किया। सेट 4 अगेन देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि ये भी आप सॉल्व कर लोगे। लाइक 2 सेट तो इजी आते हैं, राइट? देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस, या तो होगा नहीं तो नहीं होगा, राइट? या तो हो जाएगा तो इन अनदर 7 मिनट्स। नहीं हुआ तो हार्डली 20 मिनट्स पास हुए हैं और आपने एक सेट कर लिया।
वर्स्ट केस कि ये भी नहीं हुआ 3 मिनट में, एंड आपको समझ में आ गया कि इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो वेयर आर यू राइट नाउ? 20 minutes have passed, 20 minutes have passed, and you have done one set and you have idea of 3 sets. Now select the set. अब इन तीनों में सेलेक्ट करो सेट कि विच सेट आई वॉज मोस्ट कंफर्टेबल विथ, और केवल उस सेट के लिए गिव इंटायर 20 minutes। आप देखोगे कि 10-12 मिनट में वो भी सेट सॉल्व हो गया, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट वन मोर सेट। So 2.5 to 3 sets you can very easily solve every time. But skip karna, it comes on ego. Students here don't skip any set. What I have said कि अगर ऐसा कुछ केस आएगा तो आपको skip करना चाहिए। बच्चे skip ही नहीं करते हैं। They hang in for very long time. 10-12 मिनट जाने के बाद they skip it. नहीं, 3 minutes has to be the deadline. 3 मिनट के बाद skip it. वो जहां भी खड़े हो, only if you are very much comfortable, then proceed, नहीं तो skip it. Sorted? चलो, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। The correct answer was 18. Very good. Try this one. Give me answer to this question. I give you a minute. Easy question है, not a difficult one. All it needs is your understanding. Try this one. LRDI quant easy है, but VRC is not. Darshit, it depends on student to student. Some of the students find VRC easy, but not quant. Some of the students find games and tournament easy, but not arrangements. Again, it's every person's flair कि वो किस टॉपिक में ज्यादा बेटर है, किस में। चलो, ट्राई दिस वन। सिया भाई टॉप करेगा। कंसिस्टेंसी मतलब इट्स डिफिकल्ट टू से शी वुड क्रैक कैट और नॉट, बट शी विल डेफिनेटली क्रैक लाइफ। अ कंसिस्टेंट पर्सन डेफिनेटली सक्सीड्स इन लाइफ। A consistent person definitely succeeds in life. Okay, be consistent. That's the key. A less sharp mind but more consistency will always beat sharp mind with less consistency. Be consistent. The perimeter of the given figure is 136. Perimeter of the given figure is 136. Perimeter of the given figure is 136. What is the perimeter? 5b, 11a, 9b, 5a. What is this length? This length is 9b plus 5b, 14b. What is this length? This length is 11a plus 5a, 16a. So, what is the entire perimeter? The perimeter is add all of them. So 11a plus 5a 16a, 16 plus 16 is 32a, 32a plus 5b, 9b, 14b, 14b plus 14b, 28b, 28b, and this is equal to what? 136. 136. It gets cancelled out by 4. So 8a plus 7 times b is how much? So this is 7 4 से गया 34, is it? Yes sir. 7 times the area of the figure is PA minus QA square. Okay. This is one of the equations that I derived. What is the area of this figure? अगर इस figure की area की बात करें, so if I connect this, let this be A1, let this be A2. So what is A1 plus A2? A1 plus A2. What is A1? A1 is 11A into 5A, 5B. So this is 55AB.
What is A2? A2 क्या है बेटा? 14B plus 5A, 70AB. 70AB. So this is 125AB. The total area. The total area. Okay. Now 7 times the area. 7 times the area is PA minus QA square. So 7 times, or I can write PA minus QA square is 7 times 125 AB. ये बोल सकते हैं 22A plus 18B is equal to 136. Yeah, is it? पेरीमीटर निकालना है ना बेटा. What is the perimeter? पेरीमीटर निकालना है ना. So perimeter is sum of all of these lengths. So ये 5B given है, ये 11A given है, this is 9B, this is 5A. What is this length? This length is 9B plus 5B, 14B ना. What is this length? This length is 11A plus 5A, 16A. तो add all of them ना. Add करोगे तो you will have to add all the terms with A in it. 16A, 11A and 5A. That's 32A. And all the terms with B will be added separately. 14, 14, 28B. So this is the perimeter, I believe. ये perimeter है. Perimeter is this. So this is what you have. And then we figured out the area. Area individually. Okay. तब हमने निकाला area. Okay. Now this area is 55 AB and this area is 14 into 5, 70 AB, and the total area is 125 AB. And based on the question, 7 times the area is PA minus QA square. PA minus QA square is 7 times the area. And this is in terms of A. So I want B in terms of A. मुझे B eliminate करना है. So I can write B as, I can take B from here. I can take B from here. B is 34 minus 8A upon 7. Okay. Hi Anna. So 7 into 125 is 875. I can write this as 875. Okay. And then A into AB. So B की जगह I can write this 34 minus 8A upon 7. 34 minus 8A upon 7. Very good. Acha. So I don't need to multiply this as well. You automatically 7 and 7 will be cancelled out. Automatically it will be cancelled out. How it could be 7 times? क्यों? क्या problem है नंदू? This is the area 125 AB. इसका 7 times is this. It's given in the question. मतलब contradiction क्या लग रहा है आपको ये बताओ. So 125 34A minus 8A square. Okay, this is PA minus QA square. क्या contradiction है नंदू ये बता बेटा. हाँ अच्छा, it's given in the question 7 times. Okay. Now 125 into 34 is how much? So that is 4000 and 125 into 2, 250, 4250. So this is 4250A is 4250A, 4250A minus 1000A square. 1000A square, right? And this is PA minus QA square. You can compare the terms. That is not the area of the rectangle. That is the perimeter of the rectangle. Rudra Pratap. That's the perimeter, Chotu.
Now you can compare the terms. Okay. So when you compare, you will find that P is 4250, Q is 1000. P is 4250, Q is 1000. So the correct answer is 5250. As simple as it is. Rudra, that's the perimeter. That's the perimeter. So this question was completely based on reading. That's it. This question was completely based on reading and execution. There was no what should I say, ups and downs in this question. बस properly read करो, perimeter properly read करो, perimeter निकालो, equation बनाओ, area given है, put करो, get the answer. There was no technical issue with the question. All you needed to do is to read the question आराम से, and you could have solved it. Do like the session guys. Take a moment. आप लोग like नहीं कर रहे हो. You know what? Like नहीं करने से हमारा नुकसान हो रहा है. The team thinks that you guys don't need such sessions. So if anybody who feels like these sessions are helping, I urge you to like, क्योंकि आपके like से we are not earning anything. From 500 views, how much money you are gonna earn? You know what? If there are 1000 views, if there are 1000 views, 35-40 रुपीज आपको मिलते हैं, जिसमें 55% टैक्स जाता है यूट्यूब का, 15-20 रुपीज आपको मिलेंगे. ओके, फॉर 1000 व्यूज, फॉर 500 व्यूज हाफ कर लो पैसा. सो एक सेशन से हम लोग 10 रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से. एंड ट्रस्ट मी, इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा है. सो एजेंडा ऑफ दीज क्लासेस कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए. यू गाइस शुड बी हेल्प्ड. तो कीप ऑन लाइकिंग द सेशन. चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन. Try this particular question. Okay, I give you like 90 seconds इसके लिए. सर 10 रुपए का चेक भेजती है क्या यूट्यूब? ऐसा मिला के पूरे मंथ का 1000, 1500, 2000 भेजती होगी. नहीं, एक मिनिमम पेमेंट का होता है कि इतना होना चाहिए, तभी आपका आप इन कैश कर सकते हो. लाइक यू इन कैश ऑन यूट्यूब, आप बोलते हो कि इन कैश माई मनी, लेकिन एक मिनिमम है उसका. 10-15 रुपए नहीं आते. Okay, time's up. Okay, चलो गाइस देखो. Now let's say ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle. This is A,
this is B, this is C, this is D. This is a quadrilateral circumscribing a circle. ये सब ना टच हो रहे हैं, सब टच हो रहा है, ठीक है. PQ और S are the point of contact of the circle with sides AB. So AB side पे the point of contact is P, and then this is Q, and then this is R, and then this is S. PQRS. Angle A is 90. This is 90. Angle A is 90. And then QC given as 6. QC given has 6. CD given as 14. This entire thing is 14. And DA is 16. This DA is 16. You have to find the radius of the circle. You need to find the radius of the circle. Easy question. देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट्स, अगर आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस करा है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चंस. ओके, कंसेप्ट क्या यूज करना है? सर, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल. वेरी गुड. सो अगर एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट? इफ दिस इज 10, दिस वुड बी 10. From a point outside the circle, the length of both of the tangents is same. यहां देखो QC 6 given है, तो CR would be 6 because C, Q and C are tangents from point C to the circle. So if QC is 6, ये भी 6. The entire length is 14. So this has to be 8. 8 plus 6, 14. If DR is 8, again DS would be 8, going by the same logic. Right? If this is 8 and total is 16, this would be 8. And if this is 8, this would be 8. आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना था. ऑल्सो वी नो कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर हम कनेक्ट करें तो दैट इज 90 डिग्री. ऑल ऑफ दिस इज 90 डिग्री, राइट? ऑल ऑफ दिस इज 90 डिग्री. लेट्स से O इज द सेंटर और T इज द सेंटर. तो क्या हो जाएगा गाइस? दिस PT वुड बी द रेडियस एंड दिस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड. PT और TS इज द रेडियस. एंड व्हाट इज दिस APTS? ये क्या डायग्राम है? व्हाट इज दिस डायग्राम? APTS 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री. So this technically is a rectangle. In this case, a square. In this case, a square, because this is 8, this is 8. All of them are 90. So this would be 8 and this would be 8. So radius of the circle is 8. Radius of the circle is 8. Haya na? Technically, in this case, it is a square. Hello, Mr. PK. Very good. ओके गाइस, दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है. दो नहीं, 3 है आपका होमवर्क, ठीक है? 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है. होमवर्क नहीं, यू आर गोना प्रैक्टिस इट राइट नाउ और आप कमेंट में आंसर दोगे. ओके, बिफोर लीविंग द सेशन you guys have to attempt these 3 questions. So this is practice 1. Attempt it. Give the answer in the comment box. Okay. This is practice question 2. Okay. Attempt it. Give the answer in the comment box. And this is practice question 3. 3 questions. These are from number system. These are from number system. Okay. ये 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. पुट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. लास्ट सेशन के आंसर्स आपने डाले हैं कमेंट बॉक्स में एंड आई हैव रिस्पॉन्डेड देयर, तो वहां से आपको दिख जाएगा व्हाट वाज द राइट आंसर. डू पंच इन आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस इन द कमेंट एंड यस आई विल रिस्पॉन्ड इफ दैट इज राइट और रॉन्ग. चलो बाबा, हैव अ ग्रेट डे अहेड. साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन. मिलते हैं कल. Let's meet tomorrow. Till then, have a great day ahead, guys. If you want to be a part of my official Telegram channel, scan this QR code और आ जाओ, ठीक है? Solve these 3 questions. अरे गुड नाइट नहीं, solve it. Solve the questions. उसके बाद जाओ 3 questions. Okay. Take 10 minutes of time. Solve these 3 questions.
एंड पुट द आंसर्स इन द कमेंट एंड उसके बाद जाओ आराम से, ठीक है। हु आंसर्स ऑल द 3 करेक्ट देखते हैं। चलो बाबा, हैव अ ग्रेट डे अहेड, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। लेट्स मीट अगेन टुमारो। बाय बाय सौरभ।